हेलो देयर, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है एलेक्स और मैं एक 17-year-old डिजिटल आर्टिस्ट हूँ, कह सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप ड्रॉ कर सकते हैं डिजिटल आर्ट, वो भी वेरी इजीली अपने फ़ोन पर। तो और इस ट्यूटोरियल के लिए ना ही आपको कोई हाई फाई डिजिटल टैबलेट, पेन टैबलेट या स्टाइलस की ज़रूरत है। आप अपने फिंगर्स को यूज़ कर सकते हैं, दे आर एडिक्वेट। Number 1, finding a good reference. This is an obvious step because if you're a beginner, I would beg you, please do not try to draw from your imagination right now, because क्योंकि आपका जो विजुअल मेमोरी है, मतलब जिसके हेल्प लेकर आप इमेजिनेशन से ड्रॉ करने वाले हैं, वो भी बहुत ही स्मॉल है. So don't try that. The first step will be finding a good reference. Good means does not include those complex, weird, shitty pictures that you like to draw but you will not be able to right now. So find a good reference, save it. For this you can use Pinterest, Instagram और Google Images. इन दिनों में से कहीं से भी आपको फोटो मिल जाएगा, पर पिक्चर देख के सिंक करने मत बैठ जाना. Number 2 is drawing a rough sketch. This is a very important step and you shouldn't ignore it no matter whichever medium you are using, because ये काइंड ऑफ एक ब्लूप्रिंट जैसा एक्ट करेगा आपके फाइनल ड्राइंग के लिए. और ब्लूप्रिंट इज इम्पोर्टेंट. Yes, you know that you are not dumb or stupid. So draw a rough sketch first from the reference and try to copy the reference as much as you can, because आप basically observe कर रहे हैं, उसको trace मत कर दीजिए, इसका मतलब वो नहीं है. और try to understand how the angles, how the face is doing or whatever you are drawing. I don't know if you're drawing buildings or faces. Anyway, so आपको उसको सही से कॉपी करना है, मतलब एक तो रिजेम्बलेंस लगे. मैंने इधर टाइम लैप्स भी दिखाया है कैसे मैंने मिथपैट को ड्रॉ किया. मिथपैट का रफ मैंने अपने स्टाइल में ड्रॉ किया है, तो थोड़ा सा इधर उधर होगा. Doesn't mean I can't draw him. और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि टेक योर टाइम. दिस इज नॉट अ रेस, इट इज़ अ मैराथन. आर्ट इज़ अ मैराथन. तो आपको अपने पेस पे दौड़ना है. किसी कौन आगे जा रहा है, कौन पीछे रह रहा है, ये नहीं देखना है. आपको अपने पेस में दौड़ना है. और अगर आप जल्दीबाजी में अपना ड्राइंग करेंगे तो आपका ड्राइंग प्रोसेस, मतलब जो बिल्डिंग प्रोसेस है, वो बदतर से बदतर होता जाएगा. आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम्स होगा. अगर आप आर्ट लेके आगे बढ़ना चाहते हैं, हॉबी जैसा भी रखना चाहते हैं, तो प्रॉब्लम होगा. तो टेक योर टाइम, बी पेशेंट, धीरे धीरे ड्रॉ कीजिए. अगर 2-3 घंटा लगे तब भी कीजिए. ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस के बाद स्पीड आता है, एक दिन या 2 दिन ड्रॉ करने से नहीं आता. सो कीप दैट इन माइंड. वी हैव ड्रॉन द रफ स्केच. वी मूव ऑन टू स्टेप नंबर 3, व्हिच इज बेसिकली एज द नेम सजेस्ट, जस्ट अपने ड्राइंग का, अपने रफ स्केच का एक नॉर्मल सा, क्लियर सा, अच्छे लाइटिंग में पिक कीजिए, ना कि कोई फिल्टर विल्टर लगा के. उस नॉर्मल एक तो पिक्चर खींचिए और उसको सेव कर लीजिए, क्योंकि हम उसे नेक्स्ट स्टेप में यूज़ करने वाले हैं. नाउ द नेक्स्ट स्टेप will be downloading the app, or if you have it, open it. Usually I use Iris Paint X for all my drawings, all my digital drawings. Infinite Painter or Sketchbook are noise alternatives, but I prefer Iris Paint because it's really powerful for Android, and also it has a lot of cool brushes and tools that you can use, or user friendly है, वही चाहिए ज़्यादातर. So yeah, I use Iris Paint X and you can download it via the link given in the description if you want to. और या अगर आपके पास कोई और ऐप है, उसको खोलिए, create a new canvas, then import the picture you just clicked in the last step in the new canvas, and then you move on to the next step. So the last and my favorite step is digitalizing. As the name suggests, आपको अपने जो रफ स्केच इंपोर्ट किया है न्यू कैनवास में, आइरिस पेंट एक्स या कोई भी अदर ड्राइंग ऐप में, उसके ऊपर एक लेयर बनाइए. क्रिएट अ न्यू लेयर या कोई भी ऑप्शन होगा वैसा. तो क्रिएट न्यू लेयर एंड देन ड्रॉ द लाइन आर्ट. लाइन आर्ट मतलब जो आउटलाइन है उसको बनाइए जैसा आप बनाना चाहते हैं. आपके स्टाइल स्पेसिफिकेशंस पर डिपेंड करता है. एंड देन वंस यू हैव डन दैट, पेंट द ड्राइंग. आप ये टाइम लैप्स दे सकते हैं. इधर कहीं भी होगा, पता नहीं एडिटिंग में मैं क्या करूँगा, पर कहीं होगा टाइम लैप्स. तो देखिए टाइम लैप्स, मज़ा आएगा. आई डोंट नो वाई आएगा, पर आ सकता है. मिथपैट को मैंने कैसे कलर किया है, अगर आप टिप्स उठा सकते हो उसमें से तो लीजिए. और अभी आप सोच रहे होंगे कि ये बंदा बोल तो रहा है कि लाइन आर्ट बनाओ, पेंट करो, पर करे कैसे, वो कौन बोलेगा. वो थोड़ा सब्र करो,
एक वीडियो 1 घंटे 2-3 घंटे का वीडियो बन जाएगा अगर सब चीज़ एक में घुसाऊंगा, तो वो सब फ्यूचर के ट्यूटोरियल्स के लिए रहेंगे। और आप तब तक क्या कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन दबाइए, बेल आइकन भी दबा दे सकते हैं, तो आपको फ्यूचर ट्यूटोरियल्स के बारे में नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त लोग के साथ, जिससे मेरा चैनल थोड़ा ग्रो करे और मुझे थोड़ा एंथुसियाज्म मिले नया वीडियोस बनाने का, नहीं तो मैं इसकी प्रेस पर बैठा रहूँगा। एनीवे, सो enjoy the time lapse and I will see you at the end of the video. I guess our journey has come to an end, my friend. Cringe. Anyway, so video खत्म हो गया है. I hope you liked it. I hope it helped. I mean, that's the whole point. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट्स हो, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं. Additionally, you can also comment how if you like my Mythpat drawing. और मैं अपने Instagram handle जो है @AlexDraws पर ये वाला फोटो पोस्ट करने वाला हूँ, so you can check that out and support me there if you want to. Or I guess you can tag Mythpat as well. And that is all for today, guys.